Good morning, students. Government budget is still continued, and yesterday you have read about sources of revenue receipt and capital receipts, and today we are starting budget expenditure. So first of all, meaning of budget expenditure. Budget expenditure or government expenditure refers to the estimated expenditure to be incurred by the government under different heads in a year. It is to be noted that public expenditure for a welfare state has great significance because it accelerates economic growth, it reduces inequalities of income, it checks unemployment and depression. So, first of all, we should know the significance of public expenditure or objectives of public expenditure, or why should a government spend on public. So first point is for satisfaction of the collective needs of the society, then for smooth functioning of government machinery, for economic and social welfare of the people, for creation and addition of capital goods and infrastructure, for controlling depressionary tendencies in the economy, for accelerating the speed of economic development, and for reducing regional disparities of growth. So these are the motives, these are the objectives of public expenditure. Budget expenditure or public expenditure is also divided into two like receipts: revenue expenditure and capital expenditure. So we should know types of budget expenditure. It is also of two types. One is revenue expenditure and second is capital expenditure. Now we should differentiate between the two, that what is the difference between the two. So revenue expenditure neither creates assets nor reduces liabilities is called revenue expenditure. Students, you should note that two terms are repeated in all the definitions, that is liability and asset. In some definition, one thing is reducing, one thing is increasing. So we should learn all the definitions very carefully. So revenue expenditure is that expenditure in which neither creates asset, ना तो कोई asset create होती है और ना ही liability reduce होती है, ना ही उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कम होती है, liability कम होती है. तो इस तरह का किए जाने वाला एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है. अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आपको एग्जांपल्स क्या क्या हैं, यू शुड नो. एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर salaries of government employees, interest payment on loans taken by the government, pensions, subsidies, grants, social rural development, education and health services. इन सब आइटम्स पर किए जाने वाला एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिनसे किसी तरह की एसेट क्रिएट नहीं हो रही है. ये ओनली एम्प्लॉयज़ को और कंट्री की ग्रोथ पर या पब्लिक के हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, डिफेंस, इन सब पर किए जाने वाला खर्च है. या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए जाने वाली सैलरीज और वेजेस हैं. इनसे किसी भी तरह की एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, बट साथ साथ कोई लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हो रही है. ये गवर्नमेंट का रेगुलर किए जाने वाला खर्चा है. गवर्नमेंट की लायबिलिटी कहीं भी इसमें कम नहीं होती है. ये गवर्नमेंट को खर्चे लगातार करने पड़ते हैं और इनसे किसी भी तरह की एसेट क्रिएट नहीं होती है. So it is revenue expenditure. Second is capital expenditure, an expenditure which either creates an asset or reduces liability. So two terms are repeated, liability and, but liability and assets should be used very carefully in these definitions.
उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नीदर नॉर का इस्तेमाल किया गया है और कैपिटल में ईदर और, या तो एसेट क्रिएट होती है और या लायबिलिटी रिड्यूस होती है. सो नाउ यू शुड नो द एग्जांपल्स ऑफ दैट. कैपिटल एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू सर्टेन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, जिनसे एसेट क्रिएट होती है. अब इसमें दो अलग अलग तरह के एग्जांपल्स आपको देने हैं, एसेट क्रिएट होने के अलग, लायबिलिटी रिड्यूस होने के अलग. तो जिनसे एसेट्स का क्रिएशन होता है उसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज एंड लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. इन सब चीज़ों के लिए दिए जाने वाला लोन, इनसे जब लोन दिया जाता है तो एसेट क्रिएट होती है. देन रीपेमेंट ऑफ लोन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट रिड्यूसेस लायबिलिटी. हमको लायबिलिटी रिड्यूस होने का अलग एग्जाम्पल देना है, एसेट क्रिएट होने का अलग एग्जाम्पल देना है. तो लायबिलिटी रिड्यूस कब होती है? व्हेन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, जो गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं उनकी रीपेमेंट जब होती है. These expenditures are met out of capital receipts of the government, including capital transfers from rest of the world. So these are the examples of capital expenditure. Now we should know what is direct and indirect tax. I have previously told it that direct tax, whose liability to pay a tax and burden of tax falls on the same person. जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है उसके इनकम में से या उसके प्रॉफिट में से लगाया गया है और उसी को पे करना है, दैट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स. इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. ऑन द अदर हैंड, इफ अ टैक्स imposed on one person but that burden falls on some other person, that tax can be shifted on other person, like sale tax, excise duty. These type of taxes can be shifted. So these are indirect tax. So you should learn the examples of these taxes also, because sometimes you are given to classify these in exam. So income tax, corporate tax, wealth tax, gift tax, estate duty, these are the examples of direct tax. And indirect tax, excise duty, custom duty, GST, these type of taxes are indirect taxes. So you should read them thoroughly from your book, because anything may come in exam to explain separately. So students, that's all for today. Thank you.